In the name of Allah, the gracious, the merciful. Hello viewers, Norin Nawaz once again with another video lecture is here. And dear learners, don't forget to subscribe to my channel English with Norin Nawaz. And my today's video lecture will be on the lesson I Have a Dream, which is a part of intermediate syllabus. This lesson is actually a speech made by Martin Luther King Jr. And first of all, I would like to give you the introduction to the speaker, means Martin Luther King, and the speech means the lesson I Have a Dream. Martin Luther King Jr. was born on 15th January 1929 and assassinated in 1968. He was an American Baptist minister, the most prominent leader, and an activist in the civil rights movement from 1955 till his assassination in 1968. And now, something about the lesson. I Have a Dream is a public speech that was delivered by American civil rights activist Martin Luther King Jr. in 1963. What did he do in this speech? He demanded jobs and freedom and equality on the basis of the content of character and not the color of the skin. And he delivered this speech before 250,000 people. And learners, in today's lesson, first of all, I would translate the text into Urdu and you will get the synonyms of all the difficult words side by side. And at the end of the lesson, I mean to say that at the end of part 2 of the lesson, I will discuss with you the important questions of the lessons and their answers, important questions and their answers also. So let's start reading the text. And here are the synonyms of all the difficult words. So, how does Martin Luther King start his speech? He says, I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Unmindful is unaware. Trial is test, and tribulation is hardship. वो कहता है मैं इससे बेखबर नहीं हूं कि आप में से कुछ अफराद आजमाइशों और सख्तियों को झेल कर यहाँ पहुंचे हैं. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Narrow means not wide. And jail cells, you can see on the screen, are lockups. आप में से कुछ हाल ही में जेल की तंग कोठरियों से आए हैं. Some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. What is this quest? Quest is search. Battered is beaten. Persecution is cruelty. And what is this staggered is stumbled. And brutality is again cruelty. आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं. मार्टिन लूथर किंग सेज सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज. आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं जहां तुम्हें आज़ादी की जुस्तजू में जुल्म सितम के तूफानों से मजरूब किया गया. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जहां आप आज़ादी की जुस्तजू में जुल्म सितम के तूफानों से मजरूब ठहरे. बैटर्ड मीन्स बीटन. आपको मारा पीटा गया, आपको मजरूब किया गया. बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी. और पुलिस की बर्बरियत की आंधियों ने आपके कदम उखाड़ दिए. Brutality is again cruelty. And now he is giving them the courage. He's saying, you have been the veterans of creative suffering. आप तख्लीकी मुश्किलात के तजर्बाकार सिपाही रहे हैं. What is this veteran? You can see on the screen. Veteran is experienced. Creative is fertile. Suffering is misery. कहता है यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग. आप तख्लीकी मुश्किलात के तजर्बाकार सिपाही रहे हैं. कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ.
इस एतकाद के साथ काम जारी रखें that unearned suffering, बेजुर्मो खता सजा, unearned एक ऐसा जुर्म जो आपने किया ही नहीं है. Unearned means which is not fair, which you haven't done, right? कि unearned suffering, बेजुर्मो खता सजा is redemptive, निजात का बायस होती है. redemptive is purifying. आप इस एतकाद के साथ काम जारी रखें कि बेजुर्मो खता सजा निजात का बायस होती है. गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी को वापस चले जाओ. नाउ ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका. गो बैक टू एलबामा, एलबामा को वापस चले जाओ. गो बैक टू साउथ कैरोलिना, कैरोलिना जनूबी कैरोलिना को वापस चले जाओ. गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया को वापस चले जाओ. गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना को वापस चले जाओ. गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटर्स ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, हमारे शमाली शहरों की कच्ची आबादियों और गरीब बस्तियों की तरफ वापस चले जाओ. नोइंग, ये जानते हुए, दैट समहाउ, किसी ना किसी तरह, दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, कि ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है और हो जाएगी. लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डेस्पेयर, आइए हम मायूसी की वादी में भटकते ना फिरें. Here I would like to explain these two words, slums and gutters. ये एक दूसरे के ही synonyms हैं. These are the poor areas. These are the areas where basic necessities of life are not available. And this wallow is roll about, जिसे आप भटकना कहते हैं. आइए हम मायूसी की वादी में भटकते हुए ना फिरें. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. वो कहता है, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कहता हूँ कि मौजूदा मुश्किलात और मायूसियों के बावजूद मेरा अभी भी एक ख्वाब है. फ्रस्ट्रेशन इज डेस्पेयर, और वो ख्वाब क्या है? इट इज अ ड्रीम. ये एक ऐसा ख्वाब है, डीपली रूटेड, जो गहरा पेवस्त है, इन द अमेरिकन ड्रीम, अमरीकी ख्वाब में. वो कहता है ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें गहराई तक अमरीकी ख्वाब में पेवस्त हैं. रूटेड मीन्स सेट अप. अब देखें, डिटेल आएगी उसके ख्वाब की. आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट वन डे दिस नेशन will rise up, कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी. Rise up means stand up and live out the true meaning of its creed. Live out means achieve, and creed, you can see the fourth word on the screen, is faith. कहता है मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी और अपने अकीदे का सही मतलब पालेगी. We hold these truths to be self-evident. Self-evident means obvious, that all men are created equal. वो कहता है हम समझते हैं कि ये तमाम सच्चाइयाँ खुद गवाह हैं कि तमाम इंसान बराबर तख्लीक किए गए हैं. अल्लाह ताला ने तो तमाम इंसानों को बराबर तख्लीक किया है, और इस बात का सबूत हमें तो मिलता है खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं. सो वही वर्ड्स, वही चीज है जो मार्टिन लूथर किंग ट्राई टू टेल द अमेरिकन अथॉरिटीज. देन ही सेज, आई हैव अ ड्रीम. You can see on the screen the synonyms of the next paragraphs. वो कहता है, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident and that all men are created equal. And next he says, I have a dream that one day on the red hills of Georgia, वो कहता है कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर,
The sons of former slaves and the sons of former slaves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Former means previous. वो कहता है कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों पर साबका गुलामों के बेटे और साबका गुलामों के मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर मिल बैठने के काबिल हो जाएंगे. मीन्स ऑल men will be equal. Again, he's saying, I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. Sweltering is extremely hot, burning. Injustice means lack of justice, and oasis is greenery in desert. तो कहता है मेरा एक ख्वाब है एक दिन मिसिसिपी की रियासत जो कि नाइंसाफी और जुल्म और सितम की तपिश से दहकने वाली सहराई रियासत है. और आप सब वैसे भी जानते हैं कि सहरा जो है वो बहुत गर्म होता है. तो मार्टिन लूथर किंग उसी हवाले से कह रहा है कि ना सिर्फ वहाँ वेदर की हॉटनेस है बल्कि वो जुल्म सितम की तपिश से भी दहकने वाली सहराई रियासत है. एक दिन क्या होगा? विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल जाएगी. ट्रांसफॉर्म्ड मीन्स चेंज्ड इनटू एन ओएसिस, एक नखलिस्तान में ऑफ फ्रीडम, आज़ादी एंड जस्टिस, इंसाफ के. वो कहता है कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत जो कि नाइंसाफी और जुल्म की तपिश से दहकने वाली सहराई रियासत है, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में तब्दील हो जाएगी. मजीद उसकी क्या होप्स हैं, क्या उसके ख्वाब हैं, आगे चलते हैं. फिर वो कहता है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. And this sentence, I would like to tell you, is the crux of the lesson and the crux of the speech, is the moral of the lesson and the moral of the speech, is the theme of the lesson and the theme of the speech. क्या कहता है? दोबारा देखते हैं. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. कहता है मेरा एक ख्वाब है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन एक ऐसी कौम में जिंदगी बसर करेंगे जहां उन्हें उनकी जिल्द की रंगत के लिहाज से नहीं बल्कि उनके किरदार की खसूसियात के लिहाज से परखा जाएगा. और फिर वो कहता है आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक ख्वाब है. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ एलबामा whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification. You can see drip means drop down, interposition is interruption, and nullification is rejection. वो कहता है मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन एलबामा की रियासत में जिसके गवर्नर की जबान से इस वक्त दखल अंदाजी, एंड व्हाट इज दिस नलिफिकेशन? रिजेक्शन. मतलब आप किसी के हकूक को तस्लीम करने से इनकार कर दें. और एलाबामा का जो गवर्नर था वो ब्लैक्स के राइट्स को नहीं मान रहा था. तो कहता है जिसके गवर्नर की जबान से इस वक्त दखल अंदाजी और कानूनी हक तस्लीम करने से इनकार के अल्फाज निकल रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वो रियासत एक ऐसी सूरत हाल में तब्दील हो जाएगी वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. कैसी रियासत में बदल जाएगी एलबामा की रियासत, जहां छोटे स्याह फार्म लड़के और लड़कियां छोटे सफेद फार्म लड़कों और लड़कियों से हाथ मिलाने और बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चलने के काबिल हो जाएंगे. और फिर वो कहता है आई हैव अ ड्रीम टुडे, कहता है मेरा एक ख्वाब है. आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है that one day
every valley shall be exalted. Exalted means glorify. रुतबा बुलंद हो जाएगा. वो कहता है मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर वादी का रुतबा बुलंद हो जाएगा. एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो. हर पहाड़ी और पहाड़ को सिरनिगू कर लिया जाएगा. सिंबॉलिकली बात हो रही है दैट देयर विल बी इक्वालिटी. मार्टिन लूथर किंग वांट्स टू से द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स. ना हमवार जगह हमवार कर दी जाएंगी. It means all differences will be finished, and the crooked places you can see on the screen is winding and twisted. और बल खाते हुए रास्ते will be made straight. सीधे कर दिए जाएंगे. And the glory and the glory of the Lord shall be revealed. Glory means magnificence and splendor. And Lord is Allah Almighty and God, and revealed is disclosed. और क्या कहता है? और अल्लाह ताला की अजमत जाहिर हो जाएगी, अया हो जाएगी. एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर. और तमाम इंसान उसे इकट्ठे देखेंगे. ऑल फ्लैश मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स. आखिरी जो हमने आज का ये लास्ट आज के लेक्चर का ये लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा, इसमें देखें मार्टिन लूथर किंग क्या कहता है कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सॉल्टेड, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plains, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन हर वादी का रुतबा बुलंद हो जाएगा. हर पहाड़ी और पहाड़ को सिरनगू कर लिया जाएगा. हम ना हमवार जगह हमवार कर दी जाएंगी और बल खाते हुए रास्ते सीधे कर दिए जाएंगे. और अल्लाह ताला की अजमत एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील. और अल्लाह ताला की अजमत अया हो जाएगी और फिर उस अजमत को एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर. और उस अजमत को तमाम इंसान मिलकर देखेंगे. डियर लर्नर्स, here is the end of today's lecture, and the most important thing that we got today was the hope of Martin Luther King, that the day would come when everyone would be judged by the by the content of the character and not by the color of the skin. So thank you very much.